Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now the next thing we have is that we have a structures and we want to create dynamic memory allocation. This is what we do in a linked list and all data structures. ठीक है? Data structures में जो हर मामले में concepts. ठीक है? You have at every point some concepts. Beginning concept था तीन ही. Beginning concept is that you need a structure, you need to create dynamic memory allocation, and then you link the nodes together. ठीक? So if we have a structure here, for example, struct, maybe we type def it to make it simple. Type def struct student. Okay. And what will you type? Def means you create an alias of it. Like I say S for a short. So when struct student, I have to use only st. This is what is the short name for the struct student. ठीक? This is what type def does. Now, for example, you have tomorrow linked list, single linked list. You will say SL. Or it's a struct single linked list SL only. Becomes syntax becomes a little simpler. Now we have maybe the character name of size 60 and some int roll number maybe. Okay. The name the roll number. You could have many things. Students may ask. Now in the main, I am not going to create any variable of this student structure. Okay? Because the moment I create a variable, that means you are giving a static memory. I do not want to create a static memory. I want to create a dynamic memory. At the time of runtime, choose the runtime. So that means I have to create a pointer which can hold the address. So of type S3, I create a pointer *ptr. Okay? Now I don't need to write struct student *ptr. I am creating only what? St. Type def is like we say type def char comma space p, for example. Now char or p, they are same thing. I'm creating alias. So now char type a, yeah, for example, type def int I. Now I will be used as an int. So I type variable a, variable b, variable c. You say int type abc because I is an alias of it. Same is here for struct student. St is an alias. St is what? So you don't need to write here struct student. You are writing what? St asterisk ptr. You are creating a pointer variable of type st. Now, हम लिख भी सकते हैं, but we have created the alias. Now, when you create an alias, you don't need to write. Okay. Now, in the ptr, I want to drop the address of the first node, which consists of this thing. And who will create me the memory? Because I'm not creating a memory. Because if you say of type structure of type st, if you say like s1, now s1 will have everything what this has. Okay. But I'm not creating a static memory. I'm creating only pointer. A pointer means it can hold the address. It does not. For example, you say int a. You say what? If you say like int a, that means you are giving memory. We say, for example, int a. Now you are giving a memory. So 4 bytes are reserved, for example, or 2 bytes or whatever the processor size is. Int a, for example. Then in this a, you can tomorrow put for some whatever it is, but you are given the memory. But if you are saying int asterisk ptr, now asterisk ptr means a pointer. It will not create a memory which can hold some value. It can, this ptr can hold the address of some variable. It can hold some integer memory address. Actually, this memory address can hold the address of this memory location. So this will not hold anything in it. Okay. So tomorrow you could have an array of memory, for example. You can have an array of memory, which is having some huge number of bytes. Say dashatsovu bytes. Okay. But this PTR will not have those 1024 bytes. Rather, it has same thing,
It can hold the address of this location. That's it, right? Same way is this guy, this PTR. It is of type what? ST. ST is means this structure, whatever the structure is. So it can hold the address. This structure itself has a 60 bytes here and then roll number 4 bytes and all. Okay, total 64, and also some there are also some bytes which are required for structure. So it is more than 64. Okay, it will be some around 80 or 75 bytes, 76 bytes or something like that. So this huge number of bytes, PTR doesn't have that thing. PTR only is a pointer which is of type ST. That means it can hold the address. If I tomorrow create the structure with two things, the name and roll number, okay, its address can be put into this. Okay? It cannot, this PTR cannot hold the address of integer now because it's not of type integer. It is of type ST. ST is what? It is the structure. So this PTR will hold the address of that. Okay. So I need to create this. I need to create this structure now dynamically. Okay. Runtime. And for that, we have three things. Either we have malloc or we have calloc. And there could also be a realloc. Okay. Mainly we have malloc and calloc. So we have two things, malloc and now malloc. What does malloc do? Malloc creates some memory. If you say malloc, give me the 8 bytes, it will give you the 8 bytes. Malloc, give me the 4 bytes, it will give you the 4 bytes. Malloc, give me the size of int, size of whatever the int takes. We don't know, is it? It depends on the processor. It creates that much of memory. Malloc, give me the size of char. Whatever the char memory has, it creates that much of memory. Malloc, give me the size of ST. Float, anything. Now I'm saying ST. So ST is this guy. So whatever the ST has, this whole memory will be created. If I say malloc, if I say what? I say malloc, give me the size of ST. So whatever the ST is having, that whole memory will be created. That means this whole block will be created, right? But the thing is that what is the data type of that memory being created? Because if we make the data type to be of that ST, then this malloc cannot be used with integer. Then for int, I need to have a different malloc, which returns the integer address. For char, I need a different malloc. For float, I need different malloc. So what we do is we say malloc return wide pointer. Return what? You return wide pointer. That means do not return any data type. Return wide. So it has no data type and a return type. It's address return carry. It has no data type. It is your job to convert that as per your requirements. For example, this is of ST. You will say here ST asterisk because it's an address, so that's why asterisk is there, pointer. And I am typecasting it to ST. If it is integer, I will typecast it to int because malloc is going to return me wide pointer, but I need a pointer with a data type because every memory address we create has a data type. Integer has different data type because compiler understands how to work with the integer. If it is float, we need to have an IEEE 754 format. So we need to say by a float asterisk so that compiler can work with the floats. Same is here. To tell compiler कि उसी address address के याशी by ST this type. So compiler knows कि मैं किसके साथ पत्कार in direction. है ना? Structure पता है तेली दायरा में स्पीड में structure से कसो पता box अचून अंदर पता अचून दे मिस निश. What goes to neighbor miss nish. Structure format अलग. So therefore malloc doesn't return because then I need a different malloc for different data types. So I am creating single malloc and creating any memory you like using the size of int, size of char, size of float, size of double, whatever you want to, any data type. And but it returns wide. So it is your job to typecast it. Okay? You are typecasting it to that particular this thing. Samshayama? And then I can drop this address, whatever the address got returned into that PTR.
Now PTR will hold that address, right? So tell me the syntax. How I will write here? PTR is equal to, yes. It has to be typecast first st asterisk, call the malloc, size of mana foi this stc na to lehakun storage na. Now maybe sometimes malloc fails. Malloc memory को नहीं allocate कहीं. Maybe memory is full, memory go crash कहीं go memory होश ने कुछ वजह से it couldn't allocate it. So what shall it do? Then PTR will have a null in it. Then PTR what have? So after you create a memory, you check for that null. You say if PTR is equal to null, that means malloc has failed. Then maybe I printf first, I give message, I printf \n malloc failed. And I exit from the program because I don't want to an error exit. So exit one means exit one means what? Exit zero means successful exit. Exit one means error. There has some error occurred. Yes. Exit one means erroneous. Error now gonna error up. Pag isu returning program at high system is error sham. Okay? Not करो अगर error आए साउंड की हैं तिल करो इसको. We don't need else तुझे पाते हैं हम पर. ना तो कैसे exit भाग गया else करने की जरूरत नहीं. अगर ये error हो गया तो exit will exit it. So there will be no line number 14 being executed. So line number 14 will be executed only if there is no error. So I don't need to write else here. Okay. Else block लगाऊंगा बस search इस पे बना है. So वो फजूल में लगाऊंगा मैं, वो जरूरत नहीं है. Okay. अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें डेटा भरना है. अगर ये सही हो गया है. So I say maybe printf \l enter your name. So name पकड़ूंगा मैं. I will use getus. Exactly. One second. Okay. I say getus string के साथ हम getus ही करते हैं जो characters हो. So getus किस में डालेंगे? मैं किस में डालूंगा ये? PTR arrow name. Okay. Getus PTR arrow. Scanf के मतलब. Put s we have कह सकते हैं put s and get s. Put string and get string. इसको यहाँ पे put s भी लिख सकते. हाँ. इसमें हमें वो करने की जरूरत नहीं थी. परसेंट एस उस ना करो. परसेंट एस उस करो. बेस लगाऊं एम परसेंट. समझ लगाऊं परसेंट एस. अगर हम स्कैनअप से करेंगे. अगर यही काम हम करेंगे स्कैनअप से, we have to write परसेंट एस. Then we have to write हाँ. इनफैक्ट यहाँ पे हमें stdlib.h करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि malloc के लिए stdlib.h. एनीवेज अब हो गया नाम. इसी तरीके से हम करेंगे कौन रोल नंबर वगैरह. कॉपी अब इसे एंटर योर roll number. And I can't use getters for the roll number. I have to use scanf. Double quote close. %d. Double comma. Ampersand of PTR arrow. Roll number. roll number इसमें ठीक है यार. वो ना ऐसे अगर ये गो तो तेरे करा मैं print पद ना क्या शुद्ध roll number क्या है. Name is equal to
put s Peter arrow name printf roll number is equal to printf name is equal to percentage s percent s dot close comma लिखो इस ptr arrow arrow ना सर समझ में ब्याक स्टेटमेंट लगाने जरूरत है and printf roll number is equal to percentage d क्या लिखना है percent d double quote close comma ptr arrow roll number ठीक है if it worked fine अगर error चुके हैं it will run there is no error enter your name for example Junaid roll number 1 name Junaid roll number 1 आओ ना perfect so it's working fine समझ आया now I want to create for example array of these structures बुझने आपको structure करो some मगर array एक पद ब्याक बेक पद ब्याक linked list में छुन कैसे linked list में छुन आख खासा दयम छुन आसान node खबर कहते हैं तब पे link करो we need to link से कुछ जायज़ ठीक है तो या था कोई malloc बदल calloc ते लिखित we can use a calloc same way same syntax only thing is the size of चेतन लिखूं 1 comma तो कोता शी करूं स्पेल या कुनी तो 1 छा आख छा करें जिशा करें तो ये बाकी चीज़ same it will work fine okay enter your name आप पे वन कस फिर शी करूं ये syntax है size of because जिशा करें त्रेशा करें okay roll number 2 for example it's working fine so calloc works like that syntax फर्क थोड़ा easy है now I want to use for example I will use back to malloc okay use one has measures 3 zarbi size of st 3 times the means it go 3 magar imgasan 3 block contiguous imgasan 3 structure create contiguous kya gasan like an array यानी कि ये कैसे आख ब्लॉक हो इतन वो ना ये हम जो चीज नेम तो रोल नंबर ब्याह कैसे इट्स नेम तो रोल नंबर ब्याह कैसे इट्स ये चक्कर से तीते करेंगे वो चक्कर वन एरे ऑफ स्ट्रक्चर चुक क्रिएट करना मगर डायनामिकली ठीक है लिंक लिस्ट में ये चीज लिंक लिस्ट में आख नोड सा ये ब्याह नोड इट्स बनावा कि तेल भी ना बे फायद बिकॉज़ बे ऐसे सुई मसला ठीक है कैसे अच्छी आसान कौन दी जगह से आसुन ये मेमोरी मिल मेमोरी ये तक फ्री मिले अगर अमिस फॉर एग्जांपल बनो 10 अतन अस न 10 हिज मेमोरी के गसी से प्रॉब्लम मेमोरी छ यतन छ यल पछ यतन यल यपर छ बरी डेटा के छ ना इंस्टॉल प्रोग्राम डिलीट प्रोग्राम रन प्रोग्राम पछ छ मंज यतन जाय हुतन जाय छ ना कंटीन्यूअस जाय आसा लिंक्ड लिस्ट कुन चेक सी गो यतन नोड ब्याक नोड छ यतन मगर छ लिंक करो यम छ लिंक पार्ट थाउन हम यम एड्रेस त्राओ एम्ब्रो की नोड कर क्रिएट यम एड्रेस जुस मेलॉक रिटर्न करे सो यम सिन लिंक पार्टस में त्राओ इसी इज फर्क यम लिंक छ पत जोड़ने ठीक है यथ मस क्या बह कर ये कंटिन्यूअस बनाओ एरे मैं बनाओ ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स ठीक है अगर मैं लिखा साइज ऑफ इंट तो गसे एरे ऑफ इंटीजर्स साइज ऑफ कैर इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स और तेरे टाइप का से तमी आई कर नाउ आई हैव अ स्ट्रक्चर आई एम सेइंग एरे ऑफ 3 into size of st वो 3 स्ट्रक्चर बनाओ इससे पानी मर्जी से क्या लगाओ 3 लगाओ 10 लगाओ 4 लगाओ अगर से क्या लगाओ तो लिखूं 3 कॉमा साइज ऑफ बाकी सेम 3 कॉमा लगाओ यानी कि 3 उतने होते लगाओ ना 1 कॉमा इसके लगाओ ये लगाओ 3 कॉमा देखो क्या नहीं अच्छी ये सिंटैक्स 3 into अच्छी 3 into सिंटैक्स क्या लगाओ पर उन सिंटैक्स अलग 3 कॉमा कस छी करन अगर तथ अख ते करूं छ क्रिएट तथ लेखुन 1 कॉमा या छ लेखन 1 तेल जरूरत या छ सोदी साइज आ गो ना ये खड़ा गो अच्छी जरबी दिन तेल कस ना बेसिकली 1 जरबी ना गो ना सेम ही 1 लेखन जरूरत अगर इतना साइज ऑफ इंट ऑफ फॉर एग्जांपल शीट 1 जरबी 60 गो ना 60 इट डजंट मैटर फॉर अस फॉर malloc कि अगर चुक 1 लेखा मगर calloc छ लेखुन बिकॉज़ इट हैज अ comma it is not multiply अच्छु 1 comma yes
That's समझ यिवान clear कोई लोग से त्रे बनी नहीं तेल मा गसी गो एक इंतजाम this is for the one so shna doimis mas traum structures tremis mas traum rashina se ये काचे एक सीमंस वने अगर से पॉइंटर ब्रो पकना मन तेल राइबिना से एड्रेस को न्यू राइबिना that will be lost address will be lost that means if the structures are like this now and ptr is pointing to the first location now अगर से ये access करूं जी ptr वातना उन तक ptr वातना है मिसनिश and ptr arrow name ptr arrow roll number now if ptr name is वाच है ptr arrow name ptr arrow roll number ठीक है this is right do you understand but the ptr os कजन it will be lost you can't come back to it this will be lost so what we do is we create a new pointer pt and we will do this thing with the pt not with ptr ptr it will be here अवश्य array जो होती है आपकी array में जो नाम होता है ना ar it is a static pointer is what you can't change it so अगर ar पकना मन ब्रो हेविस निश ठीक है it drive address you can't do it you shouldn't allow it the array name is a static pointer you cannot change it because it holds the base address so if you change it it will be lost but here it is not a static pointer it's a normal pointer you can change it you can say ptr plus plus it will go here ptr plus plus will go here it will be lost so therefore we will not touch ptr we'll create another variable pt and we say ptr is equal to pt is equal to ptr now pt is also pointing to this location now you can say pt plus plus so that pt points here so ptr arrow name ptr arrow roll number will give this pt plus plus it will go this so we need a loop to run over this thing samjhayema so we need a loop when I come here I need also integer variable and another pointer variable asterisk pt of same type right then also I need an integer variable loop variable I now here I do for first I put into pt whatever the ptr is holding the address put that into pt so pt and ptr both are pointing to the first structure okay now I run a loop for I is equal to 0 I is less than 3 I plus plus and also I do pt plus plus later on when this one loop one iteration finishes I happens plus plus I plus plus hoga and pt also gets plus plus so pt points to the next structure I will point to 1 from 0 से 1 बन जाएगा है ना pt बने किसको पॉइंट करेगा दूसरे स्ट्रक्चर को जो दूसरा ब्लॉक होगा समझे ना now inside I will do the same maybe this whole thing I will tell here we can then printf the message and printf \n enter data for percentage d student and I plus 1 यहाँ लिखूंगा मैं है ना I plus enter data for percentage d student student percentage d student है उसके लिए data दे दो and I plus 1 I am creating I plus 1 because I is 0 0 plus 1 is no one student for this data ठीक है maybe I put up some stars here so that it will look little yeah then \n yeah okay then I do same thing print enter your name get us pt arrow name huh now I don't use ptr I use pt enter your roll number scan a percentage ampersand pt arrow roll number ठीक है ये खस पर loop वापस I has been with 1 you need to enter data for the one student okay as student number percentage d student number is 1 student number 2 मैं लिखना I plus 1 मैं लिखना सब प्रिंट करना आख अलाव it means I 0 ऐसे बिस करना print 1 it means I 1 ऐसे बिस करना print 2 it means I 2 ऐसे बिस करना print 3 लूप चले मगर 0 पे क्योंकि गोनिक बिस शू सुई ना okay whatever we could say मैं बिना फर्क है I could say I is good 1
আমি ভ্যাগাওয়ান দিয়ে লিখে দিচ্ছি। चलो उसने लिखा क्या? I could do it मच में array जो स्टार्ट होती है 0 पे। I का कोई वैल्यू रोल ही नहीं है, सिर्फ ये कितनी बार ये लूप चलेगा। I could use 1 also। much is computer science much ना ऐसे this is in our blood, we start from 0। we start all the time from 0। okay, array में तो मजबूरी है, वहां तो करना पड़ेगा क्योंकि AR of 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, वहां तो लिखना पड़ेगा, यहाँ तो वैसे बात नहीं थी, मैं यहाँ से हम सीधे 1 से शुरू कर सकते। एनीवेज, ना प्रिंट जब भी करना है उसके लिए भी तो लूप चलानी है। लूप चलाऊंगा, कहां से चलेगी? प्रिंट कौन सा करना पहले? पीटी कहाँ पहुंचा है लेकिन? एंड पे वो पहुंचा है थर्ड पे, तो उसको वापस लाना पड़ेगा। पीटी इज इक्वल टू पीटीआर। मेरे को पीटीआर तो वो अपनी जगह है ना, वापस करूंगा पीटी इज इक्वल पीटीआर, वापस आ गया पहले। पीटीआर इज पॉइंटिंग टू व्हिच? द फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट ब्लॉक। वो तो उसको सब में छेड़ा मैंने, वो पहले ब्लॉक के ही साथ। सो पीटी इज इक्वल टू पीटीआर, पीटी वापस आ गया किधर? पीटीआर के पास आ गया। अब लूप चलाऊंगा फिर से मैं, ये सेम लूप चलाऊंगा। आई सी कॉपी हियर। अच्छे, ये फॉर लूप बंद किया मैंने। ये है ना फॉर लूप बंद, हाँ। फॉर आई इक्वल टू 0 तो उसको इंडेंट थोड़ा मैंने लिखा इसी के साथ, शुड इंडेंट ना। ओके, सेम इज दिस फॉर लूप। क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, फॉर लूप में क्या करूँ? एंटर नहीं कहूंगा मैं, अब कहूंगा मैं डेटा। क्या कहूंगा? डेटा फॉर स्टूडेंट नंबर दिस इज, हाँ, printf name is equal to pt arrow name, pt arrow roll number। जब ये लूप खत्म हो जाएगी, फॉर लूप क्लोज, जब ये लूप खत्म हो जाए, एक आइटरेशन खत्म होगी, ऊपर आएगा i प्लस प्लस i बनेगा 1। एंटर डेटा फॉर 1 नंबर, pt has gone प्लस प्लस, pt has pointed to the next block। pt को भी साथ मैंने किया ना प्लस प्लस, सो pt is now gone to what? सेकंड ब्लॉक। पहली बार pt जो मेरे पास होगा, pt पहला ब्लॉक था, दूसरा ब्लॉक था, तीसरा ब्लॉक था। इसमें नेम और रोल नंबर, नेम और रोल नंबर, नेम और, अब पीटी इज इक्वल, पीटीआर पॉइंट करता है इसको हमेशा। सो पीटी इज गुड पीटीआर से, पीटी इसको ही पॉइंट कर रहा है। सो आई विल प्रिंट पीटी एरो नेम, दैट्स पीटी एरो नेम प्रिंट हो जाएगा। देन आई विल प्रिंट पीटी एरो रोल नंबर, पीटी एरो रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। देन जब ये लूप खत्म होगी, पीटी प्लस प्लस हो जाएगा। अब पीटी विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। और चूंकि पीटी इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, इट नोज प्लस प्लस करके मुझे कितना प्लस करना है। अगर ये इंटीजर होता, ठीक है, अगर पीटी इंटीजर टाइप होता है, पीटी प्लस प्लस अगर ये 4 बाइट्स थे, ये करे हा 4 इंक्रीमेंट कैसे पीटी वाते, बिकॉज़ पीटी वाज टाइप ऑफ इंट। so p compiler knows pt is of type structure, so I have to use the structure memory अगर shared byte है, प्लस प्लस मतलब कौन 8 प्लस क्या मींस 60 बाइट्स, जितना इसका साइज होगा, जो डेटा टाइप है। अगर इंटीजर है उसी हिसाब से प्लस प्लस होगा, अगर फ्लोट है उसी हिसाब से होगा, ठीक है ना। सो दैट इज वी नीड टू नो पीटी का क्या डेटा, कंपाइलर नीड टू नो। अवश्य रिटर्न करान मेलॉकस करान, वी डू टाइप कास्ट ऑफ द मेलॉक टू टेल कंपाइलर कि भाई साहब जो ये पीटी है या ये पीटीआर जो है, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। सो नाउ व्हेन पीटी प्लस प्लस इट विल गो हियर, and pt arrow name this time will give this block's name and this block's roll number, pt plus plus, okay, and loop finishes, it comes out of the loop. Samshayma, I think it has no error. Now enter your name, say I'm saying Junaid, roll number 1, enter data for student number 2। एक इसने गड़बड़ की यहाँ पे, एंटर नेम रोल नंबर हो गया, क्योंकि जब भी कैरेक्टर के साथ हम काम करते हैं, वी शुड फ्लश द कीबोर्ड बिफोर डूइंग दिस थिंग अगेन, बिफोर गोइंग फॉर गेट अस, ओके, वी शुड फ्लश इट। इसकी नीयत हम मजे हैं, हाँ, उसे एफ फ्लश stdin, we should flush the keyboard, that was the problem। we say my name is Junaid and roll number is 1, then I got Tawkir, now T TOW, oh, Tawkir Tawkir, say roll number 2, and we got, say for example, Abid, roll number 3, and bingo,
Now data for student number one, Junaid one. Data for student number two, Tawkir this. And we got Abid and roll number three. Perfect. Getting? Okay. That's all for today. And we will take up files. This is the last topic in C. That is file management. File management left out only. That is the thing that we will do next.